तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा कैसे ओडिन और थॉर kratos से बदला लेने के लिए आए थे। तो अब हमें टीयर को ढूंढना है जिसको ओडिन ने कैद करके रखा हुआ है। तो अब उसे हमें ढूंढना है और उसकी हेल्प लेनी है। तो चलो अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। और जो भी बंदे न्यू आए हैं चैनल पे वो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट देखो, फिर दूसरे पार्ट पे आओ ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छी तरह समझ आए। तो चलो अभी करते हैं अपना जर्नी स्टार्ट। अभी इसका बेटा एट्रियस मदद कर रहा है, इसको कुछ मिला था तो वो ही दिखाने अपने बाप को ले जा रहा है। तो चलो देखते हैं क्या दिखा रहा है ये, हमें क्या बताना चाह रहा है। तो आगे चलते हैं। और ये जर्नी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ओडिन के जो चेले चपाटे हैं वो हमें जान से मारना चाहते हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो हमें उनसे भी सतर्कता के साथ खेलना है और फाइट लेना है। तो चलो भाई, इसमें शायद हमें ब्लेड से आग लगाना है। तो चलो इसमें आग लगा दें, तब ये खुल जाएगा रास्ता। चलो भैया हो गया ये, अब आगे चलते हैं फटाफट से। इधर से रास्ता है क्या? ओके, इधर कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, शायद इसको खींचना है। ठीक है चलो, खुल गया यहाँ पे। अब इसके ऊपर चलते हैं जल्दी से। भाई साहब, लोगों को तो इतना मार रखा है इन लोगों ने। ये बेचारा अभी जिंदा ही है, तड़प रहा है। चलो भाई, अरे अरे भाई साहब, कौन है भाई? इतना जल्दी कहाँ लेके चला गया भाई ये? अरे यहाँ पे मार दिया। गाइस, अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। ऐसे भी पार्ट्स आते रहेंगे अभी। इधर से शायद रास्ता नहीं है, हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चलो kratos आगे की तरफ। चलो भैया फटाफट से, इस साइड जाना है क्या हमें? ओके हाँ, इसी साइड जाना है शायद। नहीं नहीं, इधर नहीं जाना है। अबे रास्ता तो एड्रेस को पता है। ओके, आ गए चेले चपाटे। चलो यार, सब मरते क्यों नहीं है भाई? ये भी यार उसी के साथ ऐसे नहीं चलता ब्रो। ओके, इनके बारे में बताया। चलो आगे निकलते हैं भाई। निकलो भाई पतली सी गली से। अरे कहाँ कूदा ये? ओके वाओ, नाइस। रास्ता ढूंढना है अब हमें। फिर से ऊपर चलो, रास्ता। ओके, यहाँ से जाना है। देख रहे हो गाइस कैसे कैसे रास्ते हैं यार। आदमी तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएगा। अरे ये कौन आ गया? थॉर का चेला, थॉर का चेला आ गया, चेला। चलो भैया, अरे नहीं भाई, अपने ही बेटे को क्यों मार रहे हो भाई? ऐसे नहीं करते ना ब्रो, हवा में ही पेल रहे हैं भाई। क्या बात, नाइस। क्या आ रहा है? स्किल ट्री। ओके चलो भैया, जो करना है जल्दी करो फटाफट से। ओके समझ गए। फटाफट हो गया।
फिर यहाँ से खोपची सी गली से निकलना है क्या? पहले अपना पावर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये खोपची सी गली से निकलते हैं। चलो आ जाओ बेटे, चलो निकलो। कोई है तो नहीं यहाँ? कोई नहीं है भाई, मेरे को लगा यहाँ पे कोई गुंडे वुंडे ना आ जाए भाई। चलो ये दबाते हैं, शायद इसको गिराना है। ओके नाइस, अब रास्ता बन गया हमारा। कूदो भाई क्रेटोस भाई, जल्दी से कूदो। ओके अब कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? यहाँ से, यहाँ से कूद नहीं सकता, तो इसका मतलब जो मैंने गिराया तो इसको फिर वापस खींचना होगा। ओके चलो ठीक है, नाइस, बढ़िया, एक नंबर। अब हमें इस चेन को खींचना है, तो कुछ है क्या आसपास दबाने वाने वाला? वहाँ पे तो लगता नहीं है कि कुछ है। अभी ये जाम हो रखा है तो इसको अभी खोलना पड़ेगा। तो नीचे मेरे को कुछ दिख रहा है, चलो इसको एक्स से भड़का के देखते हैं। ये रहा, नाइस, चलो अब हो जाएगा। अब इसको खींचते हैं, अपना एक्स वापस लेते हैं। चलो भाई क्रेटोस अपने काम पे लग जाओ। ओके ये जो रोप है हमें टाइट करना है, तब इससे हम स्लाइड करके उस पार जाएंगे। ओके ओके, गॉट इट नाइस। चलो भाई, बढ़िया भाई, एक नंबर। कोई है आसपास तो आ जाओ मरने के लिए। नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। थोड़ा रास्ता वास्ता देख लिया, नीचे का सीन क्या है। ओके हमें कूद के जाना है यहाँ पे। चलो भाई आ गए यहाँ पे चेले चपाटे। मैस आर टू चार्ज ऑफ द प्लेट्स। ओके फायर। ओके 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 ठीक है, चलो नाइस भाई, ये बर्फ जैसा। ओके ओ मारो साले, चलो हटो साले। अरे मेरे को मारने रहा, अपने दोस्त को ही मार रहा है। चल तेरी, ले ले, फाड़ दिया। अब देखो, ये देखो, चलते, नाइस। इसको पकड़ते हैं, ले 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 ले, हट। इसको भी थोड़ा देते हैं डोज, बहुत देर से बकचोदी कर दिया है। अरे अरे भैंस, अरे मारेगा, मेरे को मारेगा, मेरे को मारेगा। चल, अरे देख रहे हो कैसे कैसे डिफेंड कर रहा है। चलो इसको भी धरते हैं, ले ले, चल, मेरे को मारेगा। छू तो पा नहीं रहा, मारना। ये आग कौन फेंक रहा बे? कौन है बे? कौन आग फेंक रहा है? अरे मेरे को मारता है, मेरे को मारता है, मेरे को मारता है। पहाड़ से नीचे फेंक दूंगा। चल एड्रेस, अपने काम पे लग जाओ फटाफट से। बढ़िया, मार ऊपर वाले को। नाइस, चलो यहाँ पे हो गया है सफाया सबका। तो यहाँ का काम अपना लूट पाट का ख़त्म करते हैं, थोड़ा अपना एनर्जी ले लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे के रास्ते की तरफ। इधर तो कुछ नहीं है, हाथ दिखा रहा है ट्रेस इस साइड का। ठीक है चलो भाई, तुम्हारी बात मान लेते हैं, अब चलते हैं। ओके यहाँ पे रास्ता दिख रहा है मेरे को, इसको भी आग लगाना है जैसे हमने शुरू में लगाया था वैसे। चलो फटाफट से आग लगाते हैं। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे फटाफट कर भाई, फटाफट। ये हुई ना बात, अभी आग लगा नहीं लगा। अरे क्या कर रहा, क्या कर रहा, क्या कर रहा क्रेटोस? व्हाट आर यू डूइंग? लग गया, हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो भैया खोपची से फिर निकलते हैं भाई। इतनी खोपची जगह से निकलना पड़ रहा है, बताओ। रास्ता ही नहीं बचा हुआ है, रास्ता बनाना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अरे वैसे ये कौन? अरे वैसे कहाँ से आ रहे हो भाई, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग, कहाँ से आ रहे हो? खत्म क्यों नहीं हो रहे भाई? खत्म हो जाओ, मर जाओ सालो। अरे क्या कर रहा है, हटा इसको। अरे अरे
बेमतलब का मार रहा है। चलो भाई ये कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ाते हैं हम अपने मिमिर से। चलो मिमिर भैया देखो, पर पढ़ के बताओ थोड़ा क्या है। अच्छा आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ाई लिखाई की हो, सर भी कटवा लिए। चलो लूटपाट करते हैं फटाफट। अब यहाँ पे भी देख रहे हो, ये कहाँ कहाँ लेट के रह रहे हैं भाई, हाइब्रिड होके रह रहे हैं। क्या हाइब्रिड हो रखा है, ये क्या हो गया मेरे को? मेरी हेल्थ कितनी कम हो गई, गंदा डैमेज दिया भाई ये तो। मर जा साले, अब तो बहुत हो गया तेरा। चल इतनी हेल्थ खा गया भाई अकेले। अब चल चल ले कोक में चल। चलो भैया इसका भी काम तमाम हो गया। अब फटाफट से रास्ता अपना ढूंढते हैं, निकलते हैं। ऊपर ही जाना होगा अभी तो। ये दबाते हैं फटाफट ऊपर चलते। ऊपर कहाँ देख रहा है ये? अच्छा ऊपर चढ़ना है क्या? ओके इसीलिए ऊपर देख रहा है ये लड़का। ठीक है चलो ऊपर चलते हैं। पहले तू चल भाई, छोटा है तू। गाइस अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबा दो। एपिसोड पे एपिसोड आते रहेंगे, और आप अभी तक फर्स्ट एपिसोड नहीं देखे तो देखो। ये क्या यहाँ पे भी भाई, यहाँ पे देखो बर्फ के अंदर ये जो घुसे पड़। अरे हेल्थ देखो भाई, हेल्थ गया मैं। अरे भाई सब मर गया भाई, मर गया भाई। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे इनको पेलते हैं। मैंने निकाल लिया है अपना, और यहाँ पे पावर यूज़ कर लिया मैंने, खतरनाक वाला पावर यूज़ कर लिया, क्योंकि जल्दी ख़त्म करते हैं। आगे भी निकलने हैं गेम के ये। चलो तुम लोगों का देख रहे हो, ये फिर से कर दिया। अरे भैंस, अरे भैंस, अरे भाई, अरे ओ भाई फिर मर गया भाई। शिट ब्रो शिट। कोई बात नहीं, लेते इस बार तो नहीं बचेगा भाई, इस बार कोई नहीं बचेगा सालो। अब तुम्हारी तो मौत आ गई है, मौत आ गई है तुम्हारी। अरे भाई सुपरमैन पंच मारने वाला था, बच गया। अब तो नहीं बचोगे, अब तो नहीं बचोगे। पीछे रेड दिखा रहा है कौन? अरे एड्रेस क्या कर रहा है, कहाँ मार रहा है? इसको मारना भाई, क्या कर रहा है भाई? ये हुई ना बात। चलो यहाँ पे भी सफाया कर दिया है। फटाफट से अपना हेल्थ फुल करके ऊपर की तरफ चलते हैं। चलो भाई। अबे ये क्या है भाई, कौन है बे? ओ भाई तो आर पार घुसा दिया, क्या है ये? अबे घोड़ा। ओके आधा घोड़ा आधा राक्षस। ओके चलो भाई अब इससे फाइट लेनी है हमें। ले ले साले ले। इसका नाम है द हंटर्स। हंट्रेस है, ओके इसका नाम हंट्रेस है। चलो भाई इसे पेलते हैं हम। साले तू छाती में मेरे मारा है भाई, इसको छोड़ूंगा नहीं। पूरे घुसेड़ दिया भाई छाती में। इतनी हिम्मत, गॉड किलर से तू पंगा ले रहा है? पता है मैं कौन हूँ? गॉड किलर। क्रेटोस गॉड किलर है भाई, मैं नहीं। गॉड से फाइट कर लेता है भाई ये। भाई साहब ये, अबे अरे भाई साहब दिया पीछे से। हेल्थ लो हो गई है पर कोई नहीं। अरे 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 मारो चल चल चलती मार मार मार। पर हेल्थ ले लिया स्मार्ट। अरे बच के क्रेटोस, बच के मारो मारो, थोड़ा सा रह गया, मारो। ओ भाई क्या बचाऊं, एक बार में इतना फेंका। अबे कहाँ भाग रहा है ये? मारा। अरे
कहाँ भाग रहा है भाई, कहाँ भाग रहा है, भाग कहाँ रहा है साला? रुक, चल ले। अबे ये दूर भाग रहा है बार बार, रुक जाता है। अरे भाई साहब अब तो गया भाई, अब तो गया। ले ले चल, चलते। चलो ये हो गया। इसी बात पर लाइक करो गाइस फटाफट से। जो भी यहाँ तक मैं वीडियो देख रहे हैं, जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहा है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को फटाफट से यार। Father, the shield Mom gave you. Thor damaged it. But now, Perhaps the dwarves could take a look at it. perhaps, later. Come on, we can get in this way. Why are we here, Atreus? Okay. You remember all those shrines we found, telling the stories of giants? How the panel on the left would be their origin, and the panel on the right would be their fate? Yes, we found many. I have seen them. Well, there's more to them than we realized. ओके तो इसको The हमें collapsed pillar is new. इस साइड The shrine गिराना is just on the है। other side. करना क्या है भाई, गिर जा। ओके बगल में ये पेड़ का टहनी आ रहा है। टहनी नहीं है भाई, ये पेड़ का पूरा पेड़ ही है। करना क्या है, चलो इसको बार बार मार के देखते हैं, शायद ये पेड़ टूट जाए। Did something give? Over on the right? हाँ ये टूट तो रहा है थोड़ा थोड़ा। एक बार और ट्राई करते हैं। इससे कुछ नहीं हो रहा है, ज़्यादा असर तो नहीं हो रहा है। Hey, that looks interesting. क्या कह रहा है ये? चलो एक्स को मार के देखते हैं, जो थोड़ा सा टूटा हुआ है वहाँ पे एक्स मार के देखते हैं। Look, over there. What if you used your axe on it? ओके चलो भाई क्रैक कर लिया इसको तो। अब इसको यहाँ इस साइड गिरा दो। चलो हो गया, रास्ता क्लियर हो गया। अब चलते हैं अंदर की तरफ। बहुत बढ़िया। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है भाई, गेम में भी दिमाग लगाना पड़ता है गाइस। ओके कौन सा गेट है भाई ये? यही कुछ दिखाने आया एड्रियस अपने बाप को। You watching? या आई एम वॉचिंग। वाह भाई वाह, बेटा बड़ा समझदार है। और यहाँ पे सरकट्टे को भी निकाल दिया गया है दिखाने के लिए कि भाई आपको कुछ समझ आ रहा है तो बताइए। Come on. Atreus, wait! Yeah, I don't think he's waiting. What is this, lad? Where are we? जादुई Somewhere only दुनिया में आ giants were गया meant to लगता see. है। These shrines tell their यहाँ stories पे to the स्टोरी world. बता रहा But it है। turns out the ओके real stories, ठीक है। the secret stories, those they kept here, inside. You remember the story of Skull and Hati, the wolf giants? Odin captured them because he thinks it'll help him control when Ragnarok starts. I remember. But that's not the whole story. See, this shows the giants setting Skull and Hati free. They're free. Is this the past or the future? Depends when you're looking at it. Spoken like a giant. See? The wolves are safe. Somewhere in Vanaheim. Not the first place Odin would look, I suppose. There they are, chasing the sun and moon. Old habits. Until, look, the moon gets stolen.
somehow. Atreus. See? Hati's got nothing to chase. And they say celestial theft is a victimless crime. Not totally sure who this is, but someone comes along and rescues the moon. And then the moon blocks out the sun. A total eclipse. Haven't seen one of those in 100 winters. But then they chase an arrow, and things go back to normal. What does any of this have to do with... We're coming to that. Look, here's Ragnarok. Do you see who's leading the armies against Odin? That's Tyr. If he's gonna be around at Ragnarok, that means he's gotta be alive. Right? Mimir, can this be? Odin told me he killed Tyr, and he trusted me at the time, or so I thought. What if he didn't kill him? What if he's just had him locked up somewhere all this time? We are back to ifs. Enough. Wait, We are going home. wait! I have one more thing to show you. अब It's क्या है just out भाई here. इसके पास दिखाने को? ये लड़का बड़ा चंचल है। रास्ता बाहर जाना है क्या? और यहीं पे कुछ दिखाएगा ये? बाहर जाना है भाई, हमें बाहर ही जाना है। चलो भैया। What is this? Everything I found. Well, almost everything. That's giant craftsmanship. You've been to Jotunheim again? No, I found it in one of the other shrines. Others, right? How many have you visited? भाई इसका बाप इस पे गुस्सा कर रहा है। All of them? All the ones I could still get to in Midgard anyway. उल्टे काम करता रह रहा है बस। I don't know what it is, but it's important. Just like all this. When I was inside one of the shrines, I saw an image of Tyr imprisoned, but I couldn't tell where. There are hints inside the other shrines. They mention black smoke and the bleeding earth, but we could never figure out exactly. We. Yeah, Sindri's been helping me. Look, I talked him into it. It wasn't his idea. I just needed someone to watch my back. गुस्सा हो रहा है भाई, कंट्रोल कर रहा है। Black smoke. Bleeding earth. Could the prison be in Muspelheim? Unlikely. Odin's got no presence to speak of in the primordial realms. But the bleeding earth? Sounds like a mine, aye. The realm of the dwarves, perhaps. Svartalfheim, that's a good bet. Their mines did belch black smoke, and Odin's had his thumb on the dwarves for a very long time. That's it then. Tyr's in Svartalfheim somewhere, imprisoned in a mine. So, what now? Home. चलो भैया अब चलते हैं घर की तरफ। रिटर्न This way. Lad, फटाफट even if we से निकलते consider हैं। looking for Tyr, how do you have us getting to रास्ता Svartalfheim? याद नहीं है लेकिन फिर You भी know कोशिश Odin's करेंगे had निकलने all की। travel between realms locked up tight. यहाँ said से he had an तो idea नहीं about है, that. नहीं है भाई यहाँ से। Sindri is full of ideas. कोई Looks यहाँ kind of cracked there. There's a short इधर से तो नहीं है भाई, रास्ता तो है किधर से? कहाँ गया ये? एड्रेस कहाँ गया? ओके चलो भैया यहाँ से ऊपर चलते हैं। शॉर्टकट है शायद बोल रहा है वो, तो शॉर्टकट पकड़ते हैं। Remember when we fought our first troll out this ओके way? ठीक है, I remember you lost control. लेट्स गो। We must tread carefully, brother. नाइस। Danger is close. कोई आएगा क्या यहाँ You पे? okay fighting without गुंडे the आ गए भाई, चेले चपाटे। चल भैया जल्दी से मर जा भैया। एक और आया कूद के, बैठे मरो चालो। कहाँ से आ रहे हो?
और आगे भाई दूसरा है, पीछे से आ रहा है एक मारने के लिए। ले डिक चलो। अरे भाई तो मार दिया जी। अरे मर जाओ भाई। ओ मारा भाई एड्रेस। ओ भाई साहब पीछे से आ रहा है कोई। मर जाओ। अरे भाई ओए ओके। ओ भाई अबे सांड कहीं के मर जा। अरे भाई चल 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 पकड़ 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 पकड़। ले तेरे ही हथियार से तेरा ही गाला मड़ोड़ दिया भाई। गाइस अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं आप लोग तो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन फटाफट से दबा दो इस खतरनाक एपिसोड के लिए। चलो भैया ये पेड़ को उठा के घर की तरफ निकलना है। Don't hold the lad's curiosity against him. It goes with being young. In my youth, we learned obedience. And is that what you wish for him? Brother, he's going to walk his own path. अब इतना धीरे चलेगा तो कल तक पहुंच जाएगा भाई। थोड़ा जल्दी चल लो। With him a while. जल्दी चल लो मेरे वहाँ। दौड़ो भाई फटाफट। बंदे हैं क्या? बंदे नहीं है बंदे तो फटाफट से लूटो यार। But if you do not find Tyr, you will abandon your search for good. All right. You won't be sorry. पहुंच गया क्या घर? ओके सिंड्री आ गया भाई। सिंड्री ये हेल्प करेगा भाई हमारी टीयर को ढूंढने में। Oh yeah. Well, if you'll follow me, ये हेल्प करेगा। देखो कैसे दौड़ रहा है छमियों की तरह। सिंड्री को देखो भाई कैसे दौड़ रहा है। अब यहाँ पे ये निकालेगा टाइम ट्रैवल। I'll take it. एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होके जाएंगे हम लोग After you, my friends. इस गेट के माध्यम से। Where are we going? चलो भाई अभी दौड़ते हुए जाना है हमें। All the 9 realms. सिंड्री भी आ रहा होगा। देखो कैसे दौड़ रहा है वो। Not looking at anyone in खतरनाक दौड़ता है भाई वो। Kratos. After that Thor incident, we thought we should make up some rooms till you can figure out your next moves. Nearly इसके there. पार्ट बड़े बड़े हो रहे हैं गाइस। 2-2 घंटे के इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यार गेम ही बड़ा है। As you can see, we've settled here. आधे घंटे की भी अगर आधे घंटे की डालूंगा ना It's nothing much, but तो it's बहुत safe from ज़्यादा Finland, बड़ी एपिसोड हो safe from जाएगी। Odin's eyes. क्योंकि छोटी छोटी डालूंगा Can't beat the view और with छोटी छोटी winter डालूंगा तो और shimmering बड़ी बड़ी हो blade. जाएगी। भाई इसका घर तो बहुत खतरनाक है यार। पेड़ों में जादुई पेड़ है भाई पूरा। Actually. फिर धीरे धीरे एंटर दी हाउस। ओके Come in. चलो भाई देखते हैं इसका घर कैसा है अंदर से। Now, check if करते you would हैं। just wipe your feet very thoroughly, I'll wait. देख रहे हो भाई मजाकिया है भाई एक नंबर का। Okay then. Your bedrooms are there. पैर साफ Kitchen करके is आने को just बोल over रहा है। there. Anybody need a snack? Kratos? Snack? I do not need a snack. क्रेटोस हमेशा गुस्से में ही रहता है भाई। So we can try and rescue Tyr. To Tyr. कभी तो हंस लिया करो भाई क्रेटोस भाई। कभी तो हंस लिया करो। It's okay. एकदम सीरियस रहता है भाई। Everything? You aided my son in disobeying me. ये यही सारा I kept an eye on उसको him. इसके On your behalf. बेटे को बताया है भाई सारी Nothing risky. चीजें। Everything very इसलिए safe. उस पे गुस्सा कर रहा है। Somebody else speak. What's important right now is that we try and open up travel between realms again. You said you know a way? Yes, I do. It's just a lot of mud. Then why haven't you opened the way सफाई already, शुरू कर man? दी। Well, to be frank, there was something we needed your help with. खतरनाक। Oh! The Huldra brothers finally require the services of the smartest man alive. That's it precisely. आ गया एक और हीरो ला। ब्रुक आ गया ब्रुक। What the hell is it anyway? That is my son. बहुत दिन बाद देख रहे हैं ट्रीज को। बड़ा हो गया पहले से। He's too इसीलिए ऐसे damn react tall करता है। now. It looks like that.
I blame you. Now, come on then. Let's get him something that fits at least. He's just getting older, you daft prat. Didn't you ever have an awkward phase in your youth? Hey, I suppose what's done is done. But you'll be putting your foot down from now on if you know what's good. Oh, he's बहुत बातें trying. करते हैं भाई Me. बहुत ज्यादा। All right, let's gear you fuckers up before you go off gallivanting. चलो थोड़ा अपना अपग्रेड करवा लेते हैं आर्मर वर्मर। Busted up good. Wouldn't you rather I just whip you up a new one? It is important to me. Well, I'll see what I can do. In the meanwhile, how about I fix you up with something to get you by? चलो भाई थोड़ा घर वर देख लेते हैं। अपग्रेड तो कर दिया, जल्दी से इसको ले वो लेते हैं। जो भी ये करने को कह रहा है जल्दी शील्ड वील्ड अपग्रेड कर लेते हैं फटाफट से। नया शील्ड दे रहा है, ओके ये भी बहुत सही है। His favourite Azure Vulgarian. The fuck you call me? Exquisite. यार घर लग तो रहा बढ़िया है, hey, बढ़िया बना come रखा है see. यार, एकदम प्रीमियम, एक नंबर। एट्रियस को देखो यहाँ पे आराम कर रहा है। Nice अरे to have भाई options if I साहब wake up hungry. सही है भाई, लग तो बढ़िया रहा है, एकदम बढ़िया बना रखा है। ये देख रहे हो पेड़ों के बीच में है भाई ये घर, बड़ा सा पेड़ है उसके अंदर बना रखा है यार, बढ़िया यार एकदम काफ़ी सुंदर लग रहा है, बहुत बढ़िया, एक नंबर भाई। इसके अंदर जा सकते हैं क्या? अच्छा नहीं जा सकते। चलो यार तो क्या करें, स्टार्ट करेगा इस टीयर को ढूंढना। अब यहाँ से हमारा चालू हो जाएगा असली गेम, क्योंकि यहाँ पे सीनरी हमारी मदद करेगा टीयर को ढूंढने में। Everything all right, I hope? तो चलो भैया स्टार्ट करते How हैं अब do we इसको। unlock the realms? We'll just need something from back at the workshop. Follow me, and be sure to bring the head. चलो भैया उसको फॉलो करो। Where exactly is Tyr being held? He's imprisoned in a mine somewhere. You'll need help narrowing it down. Oh, you should talk to Derlin. Who's Darlin? He's a cousin of ours, sort of. Works for the city on safety issues. Should have access to all kinds of information on mines. And I know he's no friend of Odin. That's why your mother sought his help when she was trying to whip up a rebellion. Ready? A rebellion? Did you know about that? I did not. A rebel leader who knew Mom. Sounds like exactly what we need. I think you missed the ta-da. Well, never mind. I'll have this oiled up in no time. Meet you at the gateway outside. Rebel leader? Derlin? If that ain't giving a hound a haircut. Huh? And you just remember things however they pop into your brain. Atreus. Don't. Alright. See you out there, Sindri. You hear that? We'll just need the Bifrost in the head. Brock, do the touching. Oh, this would be the part requiring my assistance then. You said it. This device here has been crafted to your measurements. It'll help you get a better look at the problem with those Bifrost eyes of yours. So, do I control this thing somehow then? Oh, no. This is just to hold you in place while we shine this light in your eyes. Oh, Cindy, you sodding bastard! Open! Open now! I was really hoping not to use the eyelid clamps. Do it! Oh! That's it! That's it! Good! Now, release! Still unpleasant. That's our cue. Come on, hurry! I'm coming!
Grassfolker's eggs, man! What was that for? You'll see soon enough. I need to adjust. There! That should do it. See? No permanent damage. I'll show you permanent damage, you wee fuck! Kratos! Throw me at him! Horns first! Guess you takes a joke, you old goat. The Bifrost is broken. Now that we've reconfigured these gateways to use Yggdrasil seeds, you won't need a travel table or a Bifrost lamp anymore. I also used it for light. Okay, good note. I'll figure something out, but first, come on, let me show you how it works. Okay, aim your key at the rune for Svartalfheim on the right, then concentrate. This should take you to the wetlands outside Nidavellir City. Just make your way to the town square and ask for Durlin at the tavern. You sure they'll know him at the tavern? Durlin's always been an inveterate inebriate. I suppose he might have completely changed, but in my experience, Did you want to come with us? Oh, I might drop in, but the wetlands are moist. And the Grim are everywhere. Hostile, slimy, foul-smelling creatures. But good luck! Thanks. Wait, what? I said good luck! Whoa! Do you feel that? What's that, lad? Anything. Everything. It's warm. We can probably use this boat. If I can just get it free. Careful, lad. Right side, brother! Why are these things so fast? Behind you, brother! Nita! Behind you, brother! Nita. I see we're already off to a lively start. Atreus, you dropped your guard. I got the boat free, though. We can head through these channels when you're ready. I still can't believe Mom led a whole rebellion here against Odin and never talked about it. The fact that it didn't go well might have covered that notion. What your mother did before we met was her business. Did you ever ask? Eyes on the water. There are resources. If you never asked Mom about what she used to do, what did you talk about when you met? Like, did you just say, "Woman, guard the house. I will go to catch fish in the river," and then leave for 5 days? No. Your mother was far better at fishing than I.
Did you see that over there? That wheel is blocking the channel. I imagine if you can turn it, we should be able to get through. So these are wetlands, huh? Pretty accurate. It is a bog. The smell is making my eyes burn. You know, it is a fair bit more potent than when I last visited, now that you mention it. Looks like the path continues on the other side of that geyser. If only we were in Midgard. That water'd be frozen in a second. Brother, you think freezing it would work? What if you used your axe on it? Tyr was a friend to the Giants. I wonder if he and Mom ever met. If he was a part of the rebellion here. It's certainly possible. The God of War often advocated for the Giants. Although I don't recall if he ever declared allegiance outright. Come on. There's gotta be a faster way to get down there. Incoming! Right side! Nista! Behind you, father! Nista! Impressive! Okay, there's gotta be some way to turn the wheel up here. Whoa there! Never mind.
suddenly end up snout deep in cheek. The ground. Was that an earthquake? An occasional but not unheard of happenstance in Svartalfheim. With all the mining here, the land's bound to be a wee bit bothered. Oh wow. Nice job getting it to lower exactly where we need it. I was thinking, because it's so warm, maybe it's not that the cold hasn't made it here yet, but maybe it's just different in Svartalfheim? Aye, lad. Thimble winter doesn't strike all realms quite the same way. Weird that Thimble winter doesn't always make it winter. In Midgard it does, but as you can see, the effects here appear far more gaseous in nature. Observe the geysers. Observe the aforementioned aroma. These effects were present before in some form, but now there's new extremity to them. Misa! Right flank! Behind you! Look out! Misa! They capped those geysers? I think we need to get that wheel moving, but the water doesn't reach. Right side! Farther! Those things are everywhere. Moving and the gate's coming down. That's dwarven ingenuity for you. Back to the boat. If the dwarves of this realm are anything like Rock and Sindri, it's hard to imagine them siding with Odin. Well, all too often people are blinded to all but their immediate self-interest. Odin offered them safety, and defying him can be quite dangerous.
Maybe they just need a couple of gods to come along and take the fight to him. Atreus, that is not why we are here. I was only joking. War is not a joke, especially where gods are concerned. It seems, Atreus, you intend to recruit Tyr as an ally for war. I'm trying to keep our options open. Let's just keep moving. I'm glad we're out here, exploring a new realm. Maybe we could just try to enjoy the warmth? Looks like we gotta find a way to open that gate if we want to get to Nidavellir. Nista! It's too fast. Then how shall we catch it? Flank it. Attack from behind. Good. Gotta get behind it. But how? Nista! Halfway there. There's gotta be another chain to lower the rest of the gate. Look! There's a chain we can pull up there. It's clinging to the wall! You gotta knock it down! Nista! Think you can uncover that geyser from here? Oh, I think I get it. If you freeze the geyser, the pressure will turn the wheel.
Nice one. Can you see anything from that block? Wheel. Maybe? Lad, if I may, what exactly are you hoping to learn from Tia? Well, like I said, I was hoping he could tell me something about Loki. I'd also like to hear some of his stories. Traveling to other lands, giant stuff, and maybe about what it was like to fight back in the day. Just for the history, obviously. History. Let's hope Tia's in a talkative mood after being imprisoned for so long. Not all of Odin's captives can be as charmingly voluble as myself. We have no proof Tyr is truly here. Right. That earthquake earlier. Do you think there will be another one? It's unlikely, but geological disturbances tend to be unpredictable. If the geysers and smell here are worse because of Fimbulwinter, maybe the earthquakes are too? Aye, you might be onto something, lad. Atreus, look ahead. Wow. Now this looks like a city. Welcome to Nidavellir, brothers. Hey, dwarves! Oh. They're, running away. भाई देख रहे हो ओडिन का खौफ कितना है भाई, लोग डर रहे हैं, सब भाग रहे हैं इसको देख के। An alarm. ओडिन का इतना alarm like खौफ है that लोगों if में। I still had my देख body रहे हो? and was fearing the notion of being detached from it. How's that for us? सब देख के भाग रहे They are हैं। scared. ये देखो, Most definitely an alarm, I'm afraid. Why is everybody hiding? Stay alert. Hey, could we talk to We you don't for... want any trouble, please. There'll be no help, to be sure. Best we find the tavern Sindri mentioned on our own. Is that a statue of Odin? They must really love him here. Or fear him. Sindri! Hello. I'd return your surprise, but I did know you'd be here. I've got something for you. What is it, dwarf? You know, I'm glad I came back here at least once before Ragnarok. Oh, if these cobblestones could talk. Then they'd have mouths. Filthy, disgusting mouths. Do you mind if I fiddle with your bow? Well, you are long overdue for a replacement.
taking advantage of certain material. Ow. Structural sensitivity to sonic vibrations has been something I've been meaning to try for quite some time now. Thanks for, finally trying it. What's it gonna be this time? Patience. I find it's best to see these things, in action. Whew. There. Oh, take aim at that gate there. But before you loose, say, Skialfa. Skialfa. Well, I certainly didn't expect you to disturb half the creepy crawlies in Neovalir. How was I supposed to know they were there? They're stuck! Okay, so, Derlin. Sindri, any idea where the tavern is? Do I look like I've ever been to a filthy tavern? Atreus, this way. Best of luck. Imagine that large statue of Odin has something to do with it. Well, everyone's hiding on this side too. Odin's occupation of this realm has its hooks in deep. But there aren't any guards patrolling. We're clearly not a threat. Why hide? Resist and you're made an example of, to keep the rest in line. Self-preservation can outweigh bravery for even the strongest of folk. Fear keeps them safe and alive. Tavern's gotta be around here somewhere. Maybe we can try knocking on some doors for directions. Looks to be an artifact from the Dwarven Resistance. A firebomb from the chief anti-Odin propagandist in Durlin's rebellion. Quite a sharp wit she had until she turned to less subtle means of resistance. Folk may be interested in getting these back. Better in his hands than out in the open. So this lockdown really is because of us? Oh my, yes. Odin's grip on this realm is so firm, any outsider is considered a threat. Sounds like an Odinism if I ever heard one. Excuse me, but we're looking for... Nothing for you here. I don't care what you want. No food, no encouraging words, no nothing. Please!
One less feathery spy. This looks promising, right? That's like a house. If he's here, maybe you should let me do the talking. You. Well, we don't want to intimidate him. You're tall as a tree and you have a severed head on your head. None taken. Fair point, though. I think that's him. Hello? Watch yourselves. Apparently, there are intruders about. Oh, that's us, I think. Well, if you're planning on killing me, at least let me finish this song. That alarm was in just the perfect key. We're just looking for a friend of ours named Derlin. Well, we both know that's not true. Derlin's got no friends left. But if that's all you need, head out the back way there, and you'll see the safety office just across the river. Just don't go making trouble for the rest of us. And while you travel through this realm, maybe you could clean up the head's mess? What mess? Later, brother. I wish to hear of this mess. The rig's in the bay. Why don't you ask the condescending skull? Head, I've got skin. But he's right. I made a mistake. I'd have us shut them down. Sorry, one more thing. Although, these are gifts I'm giving to you, so I shouldn't be sorry and you should be thankful. Anyways, here, please be careful. It's beautiful. Thanks, Sindri. It is beautiful, isn't it? It's also very useful. You'll be able to find anything your heart desires with it. Really? As long as your heart desires the locations your father and you decide and plot to travel together, then yes. It is a compass. Ah, but a beautiful compass. Now scamper off.
Come. A boat cannot be far. Huh. Really, or Sindri made it sound like Durlin was some sort of rebellion leader. Doesn't sound like anyone's following him. Was being the key word here, little brother. There's a building just past these rocks behind me. Maybe we should head that way. Those bloody mining rigs. What about them? The Skald is right to blame me for them. They were my idea. If you've got the time, they're in the bay just beyond this tunnel. I'd particularly appreciate us checking out the mining rigs in the lake to the right. You can see the smokestacks from here. But if you don't want to explore now, it looks like Durlin's place is through that open gate to the left. So, which way do we go? So, we're going to Durlin's? Makes sense. We could always explore those mining rigs later. This is the safety office? Well, the sign a hair's breadth away from a head injury up there certainly gives that impression. We're looking for Durlin? You have an appointment? No? Has anyone ever had an appointment here? Here to collect on something, pal? Think parading a severed head around on your hip is gonna scare me into somehow approving Estrid's accretion proposal, eh? We are looking for a prisoner of Odin's. He's being kept in a mine somewhere. Some friends of ours said that you could help. Where did you get... You chop her head off with that too, eh? She was my wife. Dina and I wondered where she went after our little coup here failed. Failed? Yeah, come. Failed. Faye is dead. Rest of them are. One's left alive have to pay the price. I'm afraid I can't help you with your little prisoner situation. But he could have answers on how to stop Odin. And free Svartalfheim from the Aesir. I'm not in the business of crossing the old father anymore. Wait, before you go. Take this. What is it? A fine. Hygiene code violation for improper transport of a rotting head. 2 demerits for speaking the All-Father's given name, and, yeah. For fucking up my desk! A fine? Pay it at your leisure, okay? Get out of my office.
Hey there. So what about get out of my office? Don't you understand? You said her name was Diener? Oh, sure. Thank you. I think. Hey, this isn't a fine. Not now. There are enemies ahead. Brother, couldn't find a perch on high! Behind you, brother! Impressive! Up on you, brother! This is the last. Brother, that groom's found a perch on high! Okay, as I was saying, Dylan wrote down directions. The dwarf has given us a map. Sort of. You smelled him? But it seems to lead to a mine beyond that mountain. Ah. Tears! Derlin helped us anyway. Not everyone uses axes and arrows to fight. I thought I said. Just passing through. Derlin's map points to a mine. I see a mountain back on the other side of his office. Maybe we should head that way. No harm in exploring a bit. ये हमें सामने जो धुएं देख रहे हैं ये सारे एक टावर है, 3 टावर हैं। शायद हमें We could इन्हें prepare पूरे more को before rescuing Tyr. बंद करना है।
Mimir, were तो you चलो really the इनको one who बंद had करते those हैं rigs गाइस built? फटाफट से। Odin wanted the dwarves under his control, and, well, I convinced him he could buy their allegiance instead of demanding it outright. A trade agreement of sorts. Ugh, I hate the bay. The One smoke of the from the mining rigs rigs is here? See the smoke My above throat us? closes up. That's where we're headed. Let's see if we can't shut it down. Above you! Watch out! Brother, that groom's found a perch on high! Behind you! Right flank! Watch out! Left side! Got it! The rig's likely chock-a-block with materials that could help us. I'd grab whatever it spits up in the process. तो चलो पहले वाले को करते हैं बंद। डब्ल्यू दबाते हैं इसमें। अरे भाई पूरा पिघला दिया भाई। अब हो गया ये बंद। चलो एक हो गया यहाँ पे बंद। If the dwarves अब agreed दूसरे to the वाले deal पे with जाना Asgard, होगा हमें। अब दूसरे why वाले do पे they blame चलते you? हैं। I talked them into their own exploitation. They made their choice. Work or die is not a choice. I only made it seem so. What you just picked up there is pure Svartalfheim ore. It won't be of use in the rig anymore, but perhaps our Huldra brothers could craft something from it. Is that pure Svartalfheim slag? Give it here. How did these rigs come to be? I had them built to harvest ore for armaments. Essentially harnessing resources that would otherwise go to the dwarves. You think shutting these things down will help the dwarves become independent? I don't know, but I have to try something. Those mining rigs sure spit out a lot of smoke.
चलो भैया दूसरे वाले पे भी पहुंच चुके हैं। There's another mining rig on this अब island. चलते हैं, brother. इसको भी बंद करते हैं Smell that फटाफट smoke? से। Why would the dwarves agree to work for the Aesir in the first place? That's the heart of it, eh? You lied to them. I lied to them. Bet we could swing across that, lift thing. Gantry. Pantry. Thanks. Not quite right. इसमें हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ा। मेरे को लगता है इसको फोड़ना पड़ेगा ये। हाँ भाई इसको फोड़ना ही था। चलो यहाँ पे रास्ता खुल चुका है। अरे ये तो जमे हुए हैं यार एकदम। चलो कोई ना, खत्म कर देते हैं, क्या पता बाद में जिंदा हो जाए। इससे अच्छा अभी इनको खत्म कर देते हैं मार कर। अरे नहीं नहीं भाई, अपने बच्चे को बचा के खेल भाई, मार देगा क्या। I think we could break through the ground here. We found a high enough place to drop from.
surprised the dwarves didn't shut these rigs off themselves. One or two भाई tried. साहब इतनी देर Behind her yarn made examples of. एक्सप्लोर करने के बाद They ये killed the रास्ता dwarves? मिला है। Couldn't you have convinced them not to? बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है भाई इस गेम में तो, सच में भाई। इस वाले में तो बहुत दिमाग लगाना पड़ गया मेरे को, खतरनाक तरीके से बना रखा है। अब यहाँ से कहाँ क्या करना है? इसके ऊपर जाएंगे क्या? नहीं जाएगा इसके ऊपर। अब यहाँ से क्या करना है भाई? ओके, इसको लगता है फोड़ना है। ले भाई फोड़ दिया। क्या क्या रास्ते बना रखे हैं भाई, माँ कसम। अभी इनके गुस्सा निकालूंगा मैं। तब से इतना टाइम लग गया। वो आवाज़ नहीं कर सकते, पहले से पता चल जाता भाई। आवाज़ कर लिया करो, आवाज़। तो अब चिल्ला रहे हो, मरो। दिमाग खराब हो गया है मेरा। और इस सरकट्टे को दिखाओ अलग से, इसको समझ में आता नहीं है। चल, और हेल्थ वेल्थ बढ़ाते हैं। अब देखते हैं अब क्या करना है। कुछ होगा यहाँ पे आसपास, पहले इसको लूट लिया जाए। ओके, यहाँ पे रेड वाला है शायद, इसको खींचना है। ठीक है, लो खींच दिया। यहाँ पे ऊपर चला गया ये। That should help. अब हमें ऊपर जाना है। यहाँ पे कूदने का रास्ता बन गया शायद, यहाँ से नहीं जा सकते। चलो भैया, इसको नीचे लाते हैं ताकि हम उस पार जा सके। चलो भैया फटाफट से। तो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं। इतने दिमाग लगाने के बाद भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग इसको बंद करने के लिए। भाई साहब अब यहाँ पे भी फाइट होगा, आई नो भाई। फाइट तो लेना ही पड़ेगा इन मच्छरों से। मरो भाई, तुम लोग तो अलग ही दिमाग खराब कर रहे हो। It's clinging to the wall. We gotta knock it down. Behind you! Look out! That's showing them. तो चलो भाई बिना किसी देरी के अभी इसको भी बंद करते हैं फटाफट से, क्योंकि यहाँ पे पजल सॉल्व करते करते बहुत टाइम लग गया भाई। चलो भाई बंद हो जाओ अब तुम। हो गया भाई अपना काम। You okay, Mimir? To the blacksmiths of Svartalfheim, the creation of a weapon was a sacred thing. अब लास्ट रह गया भाई, उसको बंद करना है। तो चलो भाई उसको भी बंद करते हैं फटाफट से। और अभी तक जो भी वीडियो देख रहा है यार, कमेंट में एक बार बता देना कि आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, और लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है गाइस। The dwarf survived because of you. Ah, you're not wrong there, brother. Odin would have wiped out every last dwarf in Svartalfheim. If he couldn't use their skills, no one could.
Think that crane still works? Smell the smoke? There's another mining rig here. You speak of your deeds with shame. Do you regret not allowing Odin to kill them? I don't. If the dwarves didn't like working for Asgard, couldn't they just quit? And do what? Their newly built forges poisoned the soil of Svartalfheim. Unable to grow their own food, they had to buy it from Asgard. If they stopped working, they'd be taking food out of their own mouths. Oh, that's clever. And awful. Whoa, an Yggdrasil seed to Muspelheim. Think it might lead to that combat arena we visited years ago? What makes you say that? Wishful thinking, I guess. Going through Surtur's gauntlet, it was fun. It was training. You didn't have fun? Well, anyway. We should look for the other half of the seed. Once it's whole again, we can see where it leads. Great! Now we can make it across. They just keep coming! It's a bird trap, spawning a little wretches like there's no tomorrow. It will be so! Right side, brother! Watch out! Take it off, man! You've got this! Behind! Gaffer! Behind you! Incoming! तो गाइस सबको ख़त्म करने के बाद अब फटाफट से अब लास्ट वाले को अब हमें करना है बंद। तो फटाफट से करते हैं गाइस, फटाफट से बंद करते हैं अभी इसको भी। चलो भैया फटाफट से बंद हो जाओ। चलो भाई अब ये भी बंद हो गया। अब क्या होता है देखते हैं। It is done. If you could call so meager a task done. A wee drop out of the Asgardian occupational bucket. You must live with your deeds, but do not be troubled by them, brother. Oh? And why not? You were given an impossible problem. Do not blame yourself for failing to solve it. I'm sure the dwarves would feel differently. This doesn't fix things. No, but it is a start. A reminder, brother. That Svartalfheim slag we collected could be of considerable use in the hands of Brock or Sindri.
The air smells a lot cleaner. It's because we shut down the rigs. तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट एपिसोड में, पार्ट 3 में गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक के। तो चलिए अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।